mole of ethyl alcohol, 38.6 kilojoules of heat is required. The mass of ethyl alcohol कितना है? $100. Molar mass of ethyl alcohol is equal to molar mass means molecular weight is C2H5OH na, so it is 46 gram molar mass. So number of moles of ethyl alcohol is equal to 100 divided by 46. Number of moles in a mass upon molecular weight. Mass upon molecular weight. So 100 upon 46 is equal to 2.174 mole. 2.174 mole. So mass of ethyl alcohol 100, molar mass of ethyl alcohol is at 46. So it is number of moles. Okay. What is enthalpy of evaporation of ethyl alcohol? What is enthalpy of evaporation of ethyl alcohol? कितना है? What is enthalpy of evaporation of ethyl alcohol? बोलो ना यार बोलो. What is the enthalpy of evaporation of ethyl alcohol? Huh? 38.6. Enthalpy of evaporation of ethyl alcohol is 38.6. So enthalpy of condensation of ethyl alcohol delta condense is equal to minus enthalpy of evaporation of ethyl alcohol. Minus. And a condensation की वैल्यू इवेपोरेशन के वैल्यू के बराबर होगी, लेकिन ऑपोजिट इन साइन. ऑपोजिट इन साइन. दोनों का यूनिट सेम रहता है, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम बट साइन ऑपोजिट. So enthalpy of condensation of ethyl alcohol is equal to minus into 38.6, and that is equal to minus 38.6 kilojoules per mole. Minus 38.6 kilojoules per mole. अभी हमको क्या चाहिए? हीट ऑफ what you wanted. What is enthalpy change when 100 gram of ethyl alcohol? 100 gram of ethyl alcohol means 2.174 mole. So kilojoules per 2.714 mole.
So enthalpy of evaporation of 100 gram, evaporation, enthalpy of condensation of 100 gram of ethyl alcohol is equal to N into enthalpy of condensation of ethyl alcohol. N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना उधर 2.17 मल्टीप्लाई बाय माइनस 38.6, तो 2.14 इंटू 38.6 क्या आएगा, कितना वैल्यू आएगा, 2.14 कितना आएगा वैल्यू, मल्टीप्लाई करो एंड फाइंड आउट वैल्यू. What's the value? फाइंड आउट करो, मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आया, 38.6 मल्टीप्लाई बाय 2.174. Tell me fast. 83.92. 83 multiplied by 2.174, 83.91 माइनस आएगा 83.91 किलो जूल, यानी 100 ग्राम के लिए इतना लगेगा, बिकॉज 100 ग्राम का मतलब 2.174 मोल्स, मल्टीप्लाई बाय 1 मोल के लिए लगता है माइनस 38.6. सो दिस आंसर. नेक्स्ट सम. Heat of solution and heat of hydration. Question 2. Heat of solution and heat of hydration of AgF, silver fluoride, are minus 20.5 kilojoules per mole and minus 930 kilojoules per mole respectively. Calculate lattice energy. Calculate lattice energy.
of AgF. So AgF hydration ऐसा नहीं है. Delta S hydration of AgF is equal to minus 30, minus 930. दूसरा, delta S solution of AgF is equal to minus 20.5 kilojoules per mole. पूछा क्या? Delta is enthalpy. AgF is the question. So what we look at? Enthalpy of solution is equal to lattice enthalpy plus enthalpy of hydration. ये फॉर्मूला है. Enthalpy of solution is equal to lattice enthalpy plus enthalpy of hydration. तो हमको solution का वैल्यू मालूम है कितना है? minus 20.5. Enthalpy of lattice enthalpy नहीं मालूम, इसका वैल्यू मालूम है minus 930. is equal to minus 20.5 plus 930. So it will be 930.5 and 930 0 and 0.5. So कितना होगा 5, 9 minus 0, 9, 2 minus 0, 10 carry, 909.5. So this is lattice enthalpy. Next, one sum from your textbook. So, third sum, textbook का है, page number 89, sum number 22. What is that? No, not 22, it is 21. I made a mistake. 21. Calculate the total heat required
कुछ कासिफ का ये करने का है, वोडाफोन से बोला अभी करते। रिक्वायर, अब भी आया बोलना। हेलो, तो लेक्चर में बैठे हैं। हाँ हाँ, मुझे मैं बेटा तो नहीं है और वो हॉस्पिटल में है, आएगा तो मेल्ट 180 ग्राम of ice और आपको समझ नहीं आता। हाँ, लेकिन मैं वीडियो 7:30 तक लेक्चर देती हूँ, तो इसकी बात ही होगा। हाँ ठीक है, heat it to हाँ हाँ ठीक है, 7:30 तक लेक्चर होगा, 100 and then ठीक है। C 59059 ना, ठीक है। vaporize it आज ही करना है तो at that temperature. You are given enthalpy of fusion of ice 6.01 kilojoules at 0 degrees Celsius. You are given enthalpy of vaporization of water equal to 40.7 at 100 degrees Celsius. 40.7 kilojoules at 100 degrees Celsius. You are given specific heat of water is equal to 4.18 joules per gram per calorie. And हमको क्या निकालना है? Total heat required to melt 180 gram of ice at 0, heat it to 100 and then vaporize it to, यानी क्या करना? हमें ice है, ice को कितना 180 ग्राम, उसको किस में करना है? वाटर at 0 and then ये वाटर को क्या करना है? हीट करना है to 100. So water at 0 is water at 100. Then ये water liquid water है, उसको evaporate करना है at 100. तो देखो इधर तीन चीजें निकाल, 180 ग्राम ऑफ आइस को वाटर में करना है 0 पर, फिर वाटर 0 को वाटर 100 में कन्वर्ट कर, एंड देन वाटर 100 को वाटर गैस में कन्वर्ट कर. So your heat required is suppose Q1, your Q2, and here it is Q3. Heat required to melt 180 gram of ice at 0 is कैसे? You are given latent heat of your latent heat of fusion. You are given latent heat of fusion
उससे ही निकालो। लेटेन ऑफ फ्यूजन कितना 6.01 किलो जूल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये इससे यही वैल्यू से निकालो। यू आर गिवन मास ऑफ आइस 180 ग्राम, therefore number of moles of ice 180 upon 18, that is 10 moles. You got 10 moles. The number of moles of ice is 10 moles. So delta H of Q1 is equal to N into delta H fusion of delta H fusion of ice. N कितना आया 10 into 6.01 and that is equal to 60.1 kilojoules. Q1 is equal to N into delta H fusion. ये Q1 मिल गया। अब Q2 0 है वाटर, उसको किस में कन्वर्ट करना है 100 में। 0 वाटर को 100 में इजी कन्वर्ट करना है। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट water at 0 to water at 100 and that is equal to Q. That is equal to Q2. You are given specific heat, yes, specific heat, and Q2 is equal to mass into specific heat into rise in temperature. Mass into specific heat into rise in temperature. Mass कितना है water का 180, ice का 180 तो water भी 180. Specific heat of water दिया है, specific heat of ice कितना है 4.18 joules per gram per, यानी 1 ग्राम के लिए 4.18 joules लगता है। So 4.1 delta T 100 minus 0, T2 minus T1. So that is equal to 180 multiplied by 4.18. This many joules. This many joules because C का value joules में। दोनों को multiply करो and then divide करो 1.80 into 4.41.8 kilojoules. मैं इधर 2 पॉइंट कम किया, उधर 1 पॉइंट को कम किया। One 1.80 multiplied by 41.8, 75.24. kilojoules. Now next, to convert water at 100 to vapor at 100. Heat required to vaporize 180 gram of water, यानी 10 moles of water,
of water at 100 degree Celsius is Q3, and Q3 is equal to N into delta H evaporation of water. This is 10. Evaporation कितना है? Evaporation of water 40.7, and that is equal to 407 kilojoules. Now, total heat required is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. What is Q1? 60.1. Huh? 60.1. Q2 75.24. Q3 40.7 और 407. सबको ऐड कर लो. Plus 60.1, 542.24. Five 542.3 kilos. So this answer. Okay. So ये sum हमने किए. Now next we are going to see thermochemistry. We are going to see thermochemistry. Okay. Thermochemistry. Yes. Now what is thermochemistry? Thermochemistry के ऊपर देखेंगे. पिन लैब के दिया था भैया. वो किधर है? Yes. Sorry. Thermochemistry. ज्यादा करके सम्स इसी पार्ट पर आते.
See, when a chemical reaction takes place, there is a change in enthalpy. Change in the enthalpy means there is a change in the heat, there is a change in the energy. And study of change of enthalpy during the course of reaction is called as thermochemistry. Study of enthalpy change in the course of reaction is called as thermochemistry. So what is thermochemistry? It is a study of enthalpy changes the study of enthalpy changes during a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंजेस होता है उस स्टडी को करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री. Now, amount of heat absorbed or amount of heat evolved during a chemical reaction is called as enthalpy of chemical reaction or heat of reaction. जब कोई भी रिएक्शन होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट इवॉल्व. So amount of heat absorbed or amount of heat evolved during a chemical reaction is called as heat of reaction or enthalpy of chemical reaction. Okay? So enthalpy of chemical reaction पहले हम देखते हैं. Enthalpy of chemical reaction. Enthalpy of chemical reaction. It is denoted as delta RH. Delta RH. Okay. Amount of heat absorbed or evolved during a chemical reaction is called heat of reaction or enthalpy of chemical reaction. Enthalpy of chemical. Amount of heat absorbed or evolved during a chemical reaction is called heat of reaction or enthalpy of chemical reaction. Okay. So consider a general reaction. Consider a general reaction, general chemical reaction. P moles PA react with QB RC plus HB. And if P moles of A react with Q moles of B to give you R moles of C and S moles of B. तो इस रिएक्शन में कितना हीट एब्जॉर्ब होती है कितना हीट इवॉल्व होती है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन.
The enthalpy of chemical reaction. Enthalpy of chemical reaction is equal to summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reaction. Enthalpy of chemical reaction is equal to summation of enthalpy of product. So this is enthalpy of chemical reaction. Product कौन से? C. The enthalpy of C into S into R, sorry, R plus S into enthalpy of D. ये हो गया प्रोडक्ट की enthalpy. यानी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर. Enthalpy of C, ये वैल्यू आपको दी रही. It will be given to you. Enthalpy of D, that also will be given to you. खाली कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर. So R into enthalpy of the product plus S into enthalpy of D, ये टोटल हो गया enthalpy of the product. अभी enthalpy of the reactant. Reactant कौन है? A and B. So P into enthalpy of A plus Q into enthalpy of B, that is enthalpy of reaction. So what is HA? HA, HB, HC and HD are enthalpies of A, B, C and D respectively. तो ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का. अब बोलेंगे HC और HD और HA और HB ये सब आपको दिया है. ये तो जनरल है. यानी जितने रिएक्टेंट है और जितने प्रोडक्ट है उनकी एंथैल्पी की वैल्यू आपको दी है. खाली आपको पहला ये इक्वेशन बनाने का. वो जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन से ये इक्वेशन बनाने का और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, ऐड करने का और फिर सबट्रैक्ट करने का. यू विल गेट enthalpy of reaction, which is also called as heat of reaction. Okay, so we have to define now definition of enthalpy of chemical reaction. Definition of chemical reaction. अभी कैसे डिफाइन करें? Enthalpy of chemical reaction is difference between the sum of enthalpies of the product and that of reactant, with every substance in a definite physical state and amount being represented by the coefficient in the balance equation. HC को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? R से. HD को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? S से. कि केमिकल इक्वेशन वो बता रहा. तो R, S, P and Q are called coefficient. Are called coefficient, which tells us the amount of C, amount of D, amount of A, amount of B. What is the amount of A? P moles. What is the amount of B? Q moles. What is the amount of C? R moles. What is the amount of D? S mole. So definition of chemical reaction is what is that?
definition of what? Chemical reaction नहीं, enthalpy of chemical reaction. The definition of enthalpy of chemical reaction. इधर है भाई. Enthalpy of chemical reaction. Enthalpy of chemical reaction is defined as difference. Minus है इसलिए difference between the sum of enthalpies of product enthalpies of product and that of react. With each substance in a definite physical state, and the amount being represented represented by the coefficient in a balanced chemical equation. By the coefficient in the balanced chemical equation. Chemical reaction. ये है enthalpy of chemical reaction का definition. मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल दोगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा. मैं पूरा कोशिश करूंगा तुमको समझाने का. Example. If you are given two C2H6 plus 7O2 giving you 4 carbon dioxide plus 6 water. इसका एंथैल्पी क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? You are given enthalpy of C2H6 as minus 84.9.
You are given enthalpy of carbon dioxide minus 393.5 kilojoules. You are given enthalpy of water minus 285.8. ये तीन की वैल्यू दी गई. The enthalpy of reaction is what? Enthalpy of reaction is equal to summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant. H. Product कौन है यहाँ पर? Carbon. So 4 into enthalpy of carbon dioxide. 4 इसका coefficient है. Plus 6 into enthalpy of water. Minus 2 into enthalpy of C2H6 plus 7 into enthalpy of oxygen. So RH enthalpy of reaction कितना आएगा? 4 into carbon dioxide का वैल्यू कितना है? 393.5 plus 6 into water. Water का वैल्यू कितना है? minus 285.8 minus 2 into ethane 84.9 plus 7 into enthalpy of oxygen. Enthalpy of oxygen is 0. दिया ने लेकिन आपने 0 क्यों लिखा? हमने क्यों लिखा? Because oxygen is an element. Enthalpy of any element in its standard state is 0. Oxygen का standard state gas है, तो उसका enthalpy 0. Standard state क्या? O2 है, तो 0 है. अब इनको सबको मल्टीप्लाई करो जी. इसको मल्टीप्लाई करो. Four multiplied by 393.5 1574 minus 1574 minus 285.8 1714.8 minus minus 169 169.8 plus 0 because oxygen is 0. अब इन दोनों को ऐड करो. 1574 plus 1714.8 3288 minus 3288.8 और ये प्लस 169.8 3288.8 minus 169.8 इसका आंसर आएगा -3119 kilojoules.
So this is enthalpy of reaction. I just give you an example. Just आपको खाली इक्वेशन बनाने का है बस एंड सब्स्टिट्यूट कर. केमिकल रिएक्शन रहेगा. अभी तो ये सिंपल है. केमिकल रिएक्शन आपको दिया रहता है. कभी कभी केमिकल रिएक्शन में नहीं दिया रहेगा, वर्डिंग दिया रहेगा. तो वर्डिंग से केमिकल रिएक्शन बनाने का. You will be given the wording and then you using that wording you write the chemical reaction, write the chemical formula, substitute the values and then find the answer. So ये है chemical. I just give you an example. Okay. Next. ये हमको कितना वैल्यू मिला इधर? माइनस मिला क्या प्लस? माइनस. Delta H can be negative, delta H can be positive. If delta H is positive, it is endothermic. If delta H is negative, it is exothermic. So exothermic chemical reaction. Exothermic reaction. A chemical reaction in which heat is evolved is called exothermic reaction. Delta H is negative. इसके लिए delta H negative. For this, the delta H is negative. You can take the example. We can give the example of क्या देंगे? I'm giving CS plus O2G giving you CO2G. Delta H is equal to minus 393.5. So it is exothermic. In exothermic reaction, delta H is negative. Why delta H is negative? Can anyone tell me why delta H is negative? हीट इज इवॉल्व. हाँ, हीट रिलीज हुआ है. तो क्यों डेल्टा H नेगेटिव आया? हीट इवॉल्व हो गया है लेकिन नेगेटिव आया, उसका क्या रीजन बताता हूं. We know that delta H is equal to delta HP minus delta HR. Sorry, HP minus HR. हाँ सर. What is HP? Summation of enthalpy of product. माइनस. तो नेगेटिव इसका मतलब क्या है? HP is less than HR. R का वैल्यू ज्यादा है, HR का वैल्यू ज्यादा है देन HP, इसके लिए नेगेटिव आया. HP is less than HR. That means what is that meaning? Enthalpy of product is less than enthalpy of reactant. Enthalpy of the product is less than enthalpy of the reactant.
जिसकी एंथैल्पी ज्यादा रहती है वो अनस्टेबल होता है, और जिनकी एंथैल्पी कम रहती है वो स्टेबल रहता है। व्हाट इज एंथैल्पी? हीट। जिसका हीट ज्यादा रहता है वो अनस्टेबल रहता है, और जिसका हीट कम रहता है वो स्टेबल रहता है। तो इधर एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? प्रोडक्ट की। देखो प्रोडक्ट इज सॉरी रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है, देखो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। The third point, product is more stable than reactant. Product is more stable than reactant. प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। जिसका एनर्जी ज्यादा वो स्टेबिलिटी कम, जिसकी एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। HP is more than HR, less than HR. Enthalpy of product is less than HR. Product is more stable. तो ये पॉइंट्स दिया और एग्जांपल दिया मैंने। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे। You can get distinguish between endothermic and exothermic reaction. आपके पास 4 पॉइंट थे। A reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction. It's called endothermic reaction. Example. KClO3 solid, delta H, KCl, sorry, मैं गलत। N2 plus O2, N2G plus O2G, giving you 2NOG, and delta H 66.4 kilojoules. It is endothermic. Delta H is positive. So in endothermic reaction, delta H is positive. Delta H is equal to HP minus HR. तो इधर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। नहीं, एंथैल्पी ऑफ अ प्रोडक्ट इज मोर देन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। Enthalpy of product is more than enthalpy of reaction. तो who is stable here? बोलो, प्रोडक्ट स्टेबल है कि रिएक्टेंट स्टेबल है? Who is stable? Reactant. रिएक्टेंट स्टेबल। जिसकी एंथैल्पी कम वो स्टेबल।
So you can say your चौथा point. In endothermic reaction, reactant is more stable. Very good. Then product. Reactant is more stable than product. So this is endothermic reaction. So you can get distinguished 4 point इधर के 4 point उधर. पहला definition, दूसरा delta H positive, एक का दूसरे का negative. Product is more stable, is more. The enthalpy of product is more than enthalpy reactant. In endothermic reactant is more stable than the product. Okay. तो ये था exothermic and endothermic reaction. Okay. Now, thermodynamic standard state. What is a thermodynamic standard state? Thermodynamic standard state. What is a thermodynamic standard state? The standard state of a substance is the form in which the substance is most stable at. That means the standard state of the substance is the form in which the substance is most stable. Yani in standard state, of a substance is the form in which the substance is most stable. Now, what is the standard state? What is standard state? Pressure is 1 bar. Temperature is 298 Kelvin. Right? And concentration is 1 mole. That is standard. Standard enthalpy in standard state. Standard enthalpy. That means enthalpy of a substance at standard condition. वो कैसे लिखते हैं? H0. H reaches to 0. That means standard enthalpy. और खाली H रहेगा तो enthalpy. Standard enthalpy means H0. H reaches to 0. Now, let us see next. Thermochemical equation. Thermochemical equation. What is thermochemical equation? इस इक्वेशन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट लिखते हैं.
post thermochemical equations. This the reaction in which we write the physical state of the reactant and product are called as thermochemical equation. That means physical state means gas hai, liquid hai, या solid hai. Thermochemical equation can give you all information about a reaction. जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, C plus O2 is equal to CO2. This is chemical equation. अब मैं इसको लिखता हूं CS plus O2G arrow carbon dioxide G delta H is equal to minus 393.5 kilojoule. This become thermochemical equation. ऊपर वाला सिर्फ केमिकल इक्वेशन और नीचे वाला थर्मोकेमिकल इक्वेशन. ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है. लेट्स सी ये इक्वेशन हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है. जो मैंने लिखा हूं क्या इंफॉर्मेशन देता है. विल फाइंड. दिस इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन. बोलो क्या इंफॉर्मेशन देता है. I'll take the information from you. You read, you ask that equation. अरे क्या बोल रहा है बोल. क्या इंफॉर्मेशन मिलता है. You ask the question, you'll get the answer. बोलो बोलो बोलो. Reaction is exothermic. Okay. Reaction is exothermic. Why we say it is reaction is exothermic? Because heat is evolved. Because ऐसा delta H is negative. Yes ना? Yes, sir. और क्या इंफॉर्मेशन मिलता है. The state of product is gaseous. प्रोडक्ट का स्टेट गैस है, रिएक्टेंट का एक का स्टेट सॉलिड है. Solid. ओके वी नो वी कम टू नो फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मालूम पड़ता है. इज नोन. यस. और क्या मालूम पड़ता है. somebody what was that first boy name who you said exothermic. क्यों. क्यों एक्सोथर्मिक. डेल्टा एच नेगेटिव. कितना क्या हुआ. क्यों एक्सोथर्मिक है. सर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है. कॉन्सेंट्रेशन नहीं. एक्सोथर्मिक क्यों है. इधर कितना हीट निकला है. हीट निकला है ना. कितना हीट. हाउ मच हीट इज गिवन आउट हियर. Minus 393.5 kilojoule. I'll correct here. Heat given out is minus 393.5. तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा. जब हम यू राइट हीट गिवन आउट और हीट एब्सॉर्ब don't mention the sign. Whenever you say heat absorb or evolve, don't indicate the sign. Just say heat evolved 393.5. If you say heat evolved minus 393.5, evolved is negative and minus 393.5 is also negative. Negative and negative positive हो जाएगा. So जब भी तुम बोलते हो कि heat evolved is so and so, don't write the sign. Don't mention the sign. Yeah. So how much heat is evolved?
393.5 kilojoules of heat is evolved. When 1 mole of carbon dioxide is formed from its constituent. कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. So 393.5 kilojoules of heat is evolved when 1 mole of carbon dioxide is formed. 1 mole क्यों? कि कार्बन डाइऑक्साइड का कोएफिशिएंट 1 है. कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है. What is 1 mole of carbon dioxide? 12 plus 16, 12 plus 32, 44 ग्राम. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं. When 44 gram of carbon dioxide is formed, 393.5 kilojoules of heat is evolved. Yes. When 44 gram of carbon dioxide is formed, 393.5 kilojoules of heat is evolved. Am I right? So this is the thermochemical equation का information. एक केमिकल इक्वेशन कितना इंफॉर्मेशन दिया तुमको? कोई बोलेगा सर मैं इस इक्वेशन को और तरीके से बोलता है. कार्बन क्या हो रहा है इधर? कार्बन का कंबशन हो रहा है. कितना मोल कार्बन बर्न हो गया? 1 मोल. When 1 mole of carbon is burned, 393.3 kilojoule, 5 kilojoules of heat is evolved. कोई रिएक्टेंट के हिसाब से बोलेगा. When 1 mole of carbon is burned, 393.5 kilojoules of heat is evolved. 1 mole of carbon का मतलब क्या? 12 ग्राम कार्बन. When 12 gram of carbon is burned, 393.5 kilojoules of heat is evolved. Okay? तो ये है information. Or you can say वो भी मैं लिख देता हूँ just for your knowledge. Or you can say when 1 mole of carbon is burned, 393.5 kilojoules of heat is evolved. What is 1 mole of carbon? 1 mole of carbon means when 12 gram of carbon is burned, 393.5 kilojoules of heat is evolved. ये है
थर्मोकेमिकल इक्वेशन, कितना इंफॉर्मेशन मिलता है। ओके, H2 plus O2 giving you H2O, बैलेंस करो, ये केमिकल इक्वेशन। अगर यही केमिकल इक्वेशन मुझे थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना है इसी के बारे में, दीदी थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना है, so I'll write H2G plus O2G arrow water L। और जो बन रहा है, हम पानी बना रहे हैं, तो वो जो बन रहा है इट शुड बी 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन लगता है, वो है, लेकिन ऑक्सीजन हमको एक ही लगता है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्या करेंगे, हाफ, एंड इसका है 283.5 किलो। So what does it show? Thermochemical equation can be balanced by a fraction. Chemical equation cannot be balanced by a fraction, but thermochemical equation can be balanced by a fraction. So ये है thermochemical equation. So next time we'll see different types of thermochemical equation. Types of thermochemical. That we'll see next time. Yeah. Fine. आपको नोट्स मिला क्या? हेलो, लास्ट टाइम नोट्स मिला? हाँ सर। यस सर मिला। आज का भी मैं भेज रहा हूँ पीडीएफ बना के। ओके सर। ओके सर।